Welcome to our YouTube channel Education and Career, dear viewer and learner. Assalamu alaikum. आज ब्याक इंपॉर्टेंट टॉपिक तुंद सिलेबस हिसाब यूजन सिलेबस डिफरेंट पोर्शन में डिवाइड कर अत पोर्शन ये लिखान पार्ट आई एजुकेशन इन इंडिया पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा तमिक पार्ट ये लिखान नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन 2009 अकॉर्डिंग टू कोथारी कमीशन ओपनिंग सेंटेंस अमिक लिखान नेशनल एजुकेशन कमीशन 1964-66 द डेस्टिनी ऑफ इंडिया इज बीइंग शेप्ड इन इट्स क्लासरूम्स. So teachers can play their role significantly if they are properly trained or if they are properly prepared. The NCFT 2009 was made to achieve this goal properly. So NCFT यूजन create karne to make modern day education in India better. It is a Google map for teachers in India to make sure they are updated with the times and growth of education in our country by getting the right training for it. The status of teacher reflects the socio-cultural ethos of the society. It is said that no people can rise above the level of the teachers. This is National Policy on Education 1986. Missile Man of India, Dr. APJ Abdul Kalam believes that teachers have tremendous responsibility in shaping life of individuals. So you say NCFT yat kuch karan godnethi after independence number of commissioners the committees after independence number of commissioners the committees set up karne yaman main focus was on curricular content magar along with the role of teacher magar temo the teachers per importance along with the role of teacher and their education program telvano you see NCFTE 2009 yasa teacher education and school education. Yasa symbiotic relationship thawan development of both these sectors mutually reinforce karan the concern necessary for the qualitative improvement of entire spectrum of education. Yo NCFT यूजन NCFT 2009 yasa attempt Government of India to improve teacher education in India and to prepare an ideal innovative, human and affectionate teachers. To NCFT 2009 attempt to improve teacher education in India and to prepare an ideal, innovative, human and affectionate teacher. Magar you see NCFT at kuch prepare karan at kuch banawan amit apex body yozan NCT National Council for Teacher Education. National Council for Teacher Education wucho statutory body yozan set up chamas karne in 1995 month. You play karan a significant role in regulating and maintaining the standards in teacher education. But teacher education is question sector related. Apex body, statutory body, NCTE National Council of Teacher Education. The National Council for Teacher Education is prepare kormat. NCT is develop kormat. Course NCFT National Curriculum Framework for Teacher Education. Magar joy framework जो circulate in March 2009. Magar you see framework prepare आमत करने I'm proud of this significant improvement this significant improvement India background background पे बनाना NCF National Curriculum Framework 2005 and RTE Act 2009 वो दोन पे बनाना two significant developments NCFT बनाना particularly NCF 2005 and the Right of Children to Free and Compulsory Education Act 2009 go अगर वो initial draft NCFT 2009 develop by expert committee yat mans vice chancellor of universities या dean of school eminent scholar teacher educator trainee
टीचर्स मेंबर्स ऑफ NCERT SCERT डाइट्स IASE यम हसा गसान इंक्लूड यानी यमो अत मज हेल्प कोर कत यह ड्राफ्ट बनानस मज कमिक इंसत कमो कमो को टेक पार्ट को अत हसा बन एक्सपर्ट कमेटी अत एक्सपर्ट कमेटी मज कम अत मज इमिनेंट स्कॉलर्स अत मज टीचर एजुकेटर्स फैकल्टी मेंबर्स ऑफ NCERT डाइट IASE इंडियन एडवांस्ड School Education and University Departments of Education युजन headed करान by CL Anand तेल वनो अमिक चेयरमैन युजन सह बना CL Anand वो वो अमिक युजन ये NCERT 2009 अत कम ऑब्जेक्टिव या मेन गोल्स क्या टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ टीचर एजुकेशन इन इंडिया to improve the quality of teacher education in India doyam to produce good teachers who are professionally competent and human in their approach yani doyam hasa chahamik objective the goal of NCERT to improve the quality of teacher education in India to produce good teachers who are professionally competent and human in their approach. Third, to equip teachers with skills and knowledge and to address the diverse needs of learners को equip करो से teachers with modern skills of knowledge यम student वुचो यमन आसन diverse need यम किस कन satisfy करित ब्या to enable them to understand the process of socialization इथे कन ब्या एम अमिक ब्या गोल यह बनाओ ये स्टूडेंट सेंटर्ड लर्निंग यानी प्रोसेस गसान यह बन स्टूडेंट सेंटर्ड लर्निंग ब्या करो अत मज इंक्लूड यानी इनक्लूसिव क्लास रूम्स बनाओ यम जन नीडेड स्टूडेंट यम डिसेबल्ड बनाओ क्लास रूम एज पर NCERT बनाओ इनक्लूसिव क्लास रूम ब्या अत मज कंटिन्यूअस ग्रोथ फॉर टीचर्स continuous growth for teachers इथे ethical standards यम क्या objective block objective to develop skills for guidance and counseling इथे to enable the prospective teacher to understand the nature purpose of philosophy of secondary education to enable them to make pedagogical analysis of the subjects they are to teach at the secondary stage. Emphasize emphasis has been given on teacher as a reflective practitioner. Reflective practitioner be a modern teaching approach. Modern teaching approach such as constructivism, comprehensive learning, ICT integration need to be highlighted. Teacher education is a long and continuous process in which pre-service, in-service and continuing professional development of the teacher बीच curriculum वो अत theory ते practical ते ये NCERT हिसाब suggestion तुई करियो integrate तुई करियो correlate theory and practice in the subjects in curriculum. You see NCERT 2009 शेन चैप्टर मज डिवाइड कुछ चैप्टर चैप्टर युदन कंटेक्स्ट कंसर्न एंड विजन ऑफ टीचर एजुकेशन यानी NCERT डिवाइड मानो ड्राफ्ट कोर्मत डिवाइड इनटू 6 चैप्टर्स चैप्टर कंसर्न कंटेक्स्ट concerns and vision of teacher education क्या दोयम curricular areas of initial teacher preparation. Third, transacting their curriculum and evaluating the developing teacher. Fourth, continuing professional development and support for in-service teachers. Fifth chapter युजन preparing teacher educators. Sixth implementation strategies. यानी यम साथ ड्राफ्ट वुचान यह 6 chapters डिवाइड कर context concerns and vision of teacher education. अगर अत पे NCERT 2009 बनान vision of teacher education क्या यानी quality करो produce qualitative teachers, improve teachers यम skills दिमो या become curricular area of initial teacher preparation यानी training teacher in service and pre service कमन areas मज transacting the curriculum and evaluating the developing teacher इसकी evaluate करती teacher education
इथे अमिस कित गन ब्या इथिकल स्टैंडर्ड्स यानी अमिस अगर यह पास आउट अगर पीजी कर्मुत यानी यह हसा कुछ सब्जेक्टस मज एक्सपर्ट मगर अमिस दिमो वक्तन फवक्तन हसा दिमो अमिस ट्रेनिंग यानी यम सि कॉम्पिटेंट टीचर बन यम सि नीड्स ऑफ द आर बनान तथ पे कित बन कॉम्पिटेंट टीचर तवे कंटिन्यूइंग प्रोफेशनल डेवलपमेंट यानी इथिकल स्टैंडर्ड्स थो मेन गोल सह कत मज कंटिन्यूइंग डेवलपमेंट प्रोफेशनल डेवलपमेंट एंड सपोर्ट फॉर इन सर्विस टीचर्स यानी इन सर्विस टीचर्स दिमो वक्तन फवक्तन यानी तिहज नॉलेज थो अप टू डेट यानी दिमो तिम थो वर्सटाइल विथ न्यूली इनोवेटिव स्किल्स थो या इथे प्रिपेयरिंग टीचर एजुकेटर्स पत कित करो इम्प्लीमेंट इन आवर स्कूल यानी इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रेटजीज अगर NCFT हाईलाइट कर प्रोपोर्शन हाईलाइट कर कित हको पत स्कूलन मज इम्प्लीमेंट कर सो अगर वो इन नटशेलस मज इसेंस ऑफ द NCFT 2009 एम क्या इसेंस क्या करो ट्रांसफॉर्म टीचर एजुकेशन इन इंडिया बाय फोकसिंग आवर प्रोफेशनल डेवलपमेंट रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर एंड लर्नर सेंटर्ड अप्रोच यानी सोन अजुक वीडियो यह सो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन NCFT 2009 अत कुछ डेवलप करान डेवलप करान NCT नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन यानी 2009 मज कर मगर पर्टिकुलरली बेस कत पे NCF 2005 बी RTE एक्ट 2009 पे यानी अगर वो टेक पार्ट कोर्मुत एमिनेंट स्कॉलर्सो टीचर्सो एजुकेटर फैकल्टी ऑफ NCERT डायरेक्टर IASE इंडियन एडवांस्ड स्टडी ऑफ एजुकेशन एंड यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट्स ऑफ एजुकेशन अगर हेड वो या चेयरमैन कुछ CL आनंद तुम करो सन चैनल लाइक तुम करो शेयर तुम करो सब्सक्राइब गॉड ब्लेस यू।